Okay, so last year how much did you get? कितना आया था? Sir, I got 52. 52 in objective. In objective. So my subjective was not checked. Okay, fine. Okay, so syllabus अगर देखें तो उसमें calculus portion में the new stuff is the stuff that I don't know whether you know or not is sequence. Yes. Sequence and its numbers, convergence. सर इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस के थ्योरम्स और टेस्ट जो होते हैं सीरीज में भी, Infinite series, Taylor series, stuff like that. Yes sir. Series, Taylor series, और उसके बाद बेसिक कैलकुलस है फिर तो, टिल डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये सब बेसिक कैलकुलस है। फिर फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, डबल इंटीग्रल्स भी है। सो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस अ लिटिल बिट, फंक्शंस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, डबल इंटीग्रल्स, और थोड़ा सा ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है। एंड लास्ट थिंग इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। Differential equation. So most of the time we'll be spending on this. This is the real analysis part. So in the calculus, you should find out कि बाकी portion of calculus में तुमसे बनते हैं कि नहीं। Like सर जो जेई वाली कैलकुलस है, जो जेई की कैलकुलस है, उसमें तो बनते हैं। बाकी कुछ कुछ जैसे आपने टॉपिक्स एक दो हाईलाइट किए हैं, उसमें और मेरे हिसाब से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि शायद इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, ऑर्डिनरी लीनियर है बस। सर वो एक्चुअली क्या है, वो सब्जेक्टिव के सिलेबस में है, वो मैंने आपको भेजा नहीं होगा। तो ठीक है, तो सब्जेक्टिव का सिलेबस भी भेज देना, तो फिर वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है सर, अभी वो हम देख लेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में। अभी हम जो ये दो टॉपिक्स आपने जो हाईलाइट किए हैं उसी से शुरू करते हैं अभी। हाँ, so the plan for maths will be, first we'll start with sequences, then sequences में बहुत सारे चीज सीखना है, convergence and all basic definitions and how to find the limit for a converging sequence, then infinite series with positive terms, then उसमें सारे टेस्ट्स आएंगे, बहुत सारे टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस होते हैं। एंड देन थर्ड थिंग विल बी इन्फिनिट सीरीज विथ। सर मैं कहना चाह रहा था, जो क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक इन टॉपिक्स का तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं, तो जो आपने क्वेश्चन देखे उस हिसाब से मतलब कितना लेवल ये पूछते हैं क्या है? यू नीड टू नो ऑल द थियरी बिफोर यू कैन ट्राई द क्वेश्चंस। थियरी के बिना वो लेवल का तुमको कैसे अंदाज लगेगा? हाँ पर सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको तो पता होगा। हाँ, इट इज नॉट वेरी टफ, इट्स फाइन ओनली, बट यू नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, फिर इसके बाद टेलर सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज, टेलर सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज। फूरियर एनालिसिस है क्या सिलेबस में कहीं? हाँ जी सर, वो सब्जेक्टिव में तो पक्का होगा कि वो इंजीनियरिंग का सिलेबस में आता है। फूरियर सीरीज भी है? हाँ जी सर है। तो सिलेबस काफी ज्यादा है। ये सर ये एग्जाम का जो मेन गेम है वो यही है कि आपको सिलेबस की रीच होनी जरूरी है। ओके, तो ये सब चार चीज कम से कम करना है पहले रियल एनालिसिस में, उसके बाद हम लोग मैट्रिसेस करेंगे। जी सर। तो फाइन, वी विल स्टार्ट विथ सीक्वेंसेस। सर इसमें जैसे आप पढ़ाएंगे तो मैं मतलब मैं नोट डाउन करूं या मैं जो क्या करूं, मतलब क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग टू यू, बट पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने कभी पढ़ा नहीं है क्या सीक्वेंस, कन्वर्जेंस, ये सब? नहीं सर, मैंने मतलब नहीं, आई थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मैंने नहीं। तुम इंजीनियरिंग यू हैव पास्ड, राइट? यस सर। बीटेक? यस सर। बीटेक इन व्हाट? सर इन ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कहाँ से? सर ये आईपी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ।
तो वहां पे ये सब नहीं था। फर्स्ट टू कोर्सेज ऑफ मैथ्स क्या थे? सीक्वेंस होना चाहिए था, कैलकुलस सीक्वेंसेस एंड ऑल। नहीं सर, सीक्वेंस नहीं था इसमें। ये था जैसे ये था ना, टेलर सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज, फोरियर सीरीज, ये सब पढ़ाया था उसमें, बट ये दैट नहीं। इज यूजफुल इन इलेक्ट्रिकल, बट फर्स्ट ईयर में कॉमन कोर्सेज होता है ना। हाँ जी सर, फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर में सारे कोर्सेज कॉमन होते हैं, सारे मतलब कॉमन इन ऑल। उसमें मैथ्स में सीक्वेंसेस ऐसा नहीं पढ़ाया था। नहीं सर, पक्का नहीं। Okay, fine. So we have to start from the basics. Just will be recorded, so you can watch it later. But pay attention and try to understand what is happening. Uh, so first of all, you know what the meaning of a sequence is, right? What is a sequence? ये तो पता ही है, right? Hello. हाँ सर, सीक्वेंस एक मतलब पैटर्न फॉलो करते हैं, जो टर्म्स एक पैटर्न फॉलो करते हैं। So basically, there will be some rule which will tell you how each term will be. Yes, sir. So F1 will be then 1 plus 1 by 2, F2 will be 2 plus 1 by 2, and so on. So a sequence is just a sequence of terms where there is a definite rule by which each term can be generated. And now what we are going to talk about is what is a convergent sequence. Convergent sequence. So this is the formal definition. Basically, convergent sequence means that will the terms tend towards some limit after, say, n tends to infinity, will all the terms tend towards some limit, right? If the terms tend towards some limit L, we will say that the sequence converges to L. Sequence converges to L. Okay. So what does that mean? That if we can write limit n tends to infinity, f of n is equal to L, then we are saying limit of this sequence is L, right? Are you understanding what I'm saying? Yes, sir. So limit of n tends to infinity means when you keep writing the terms, when n becomes very large, right? So most of the terms towards the end tend to become closer and closer to L. That is your convergent limit. Formal, this is just to understand, the formal definition of this is like this: a sequence f of n is convergent if there exists a number L for which the following property holds, for which this property holds. What is the property? To each given epsilon greater than 0, there is a number, a natural number m, such that mod of fn minus L is less than epsilon is true for all n greater than equal to m. So this is the way it is written. Now you have to understand what this means. So let's think about it. What do you think it means right now? This statement. क्या समझ में आ रहा है तुमको? सर बेसिकली ये है कि जैसे जैसे मतलब एक जो मतलब एक नेचुरल नंबर m से हम मतलब एक नेचुरल नंबर m से हम ज्यादा वाले नेचुरल नंबर्स पे जाएंगे, तो फिर वो जो जो fn माइनस l है छोटा हो जाएगा। हाँ, so what this means is कि the sequence is said to be converging if there is an L for which no matter what epsilon you choose, कुछ भी तुम choose कर लो ये epsilon की value you can choose whatever you want, let's say 0.01, right?
So what I want to show is that fn, which is any term of the sequence, and L, दोनों के बीच का difference, the distance between them, right? Mod means distance between them, right? Yes. The distance between these two numbers will be smaller than epsilon for all n greater than m. मतलब क्या हुआ कि if you have picked, if you don't believe, suppose I say that limit of a function is L, right? Now you don't believe it and you are saying no, the function never gets super close to L, right? So you will say what, that okay, actually limit is L minus 0.03, let's say. According to you, your answer is L minus 0.03, correct? For the limit of the sequence. So then your epsilon is basically 0.03. And what I have to show is that beyond a certain m, all terms of the sequence are closer to L than 0.03. समझ में आ रहा है? ये थोड़ा ओके मतलब ये है कि सपोज सीक्वेंस है, लेट्स से सीक्वेंस इज ffn is defined as 1 by n. So as you go ahead, what are the terms? F of 1 क्या है? 1. F of 2 is 1 by 2. F of 3 is 1 by 3, right? हाइपरबोला टाइप. हाँ हाइपरबोला टाइप. हाँ, so ये दिख रहा है कि terms are becoming smaller and smaller, right? So it looks like terms are going to get closer and closer to 0, right? Correct. As n increases, terms will get closer to 0. Yes. But right now that is not a proof. Now we cannot say that limit n tends to infinity f of n is equal to 0 right now, because right now it's not necessary that it is 0 limit. Maybe the limit was something else which is small, right? Correct. तो क्या बोल रहे हैं? सपोज यू अस्यूम, तुमने बोला कि लिमिट ऑफ एफ एफ एन एन टेंस टू इंफिनिटी was actually, let's say you said it was 0.001. According to you, this is the limit, right? Correct. Right. So what should I say? My point is that the limit is 0 actually. So you are saying the difference between these two limits is what? 0.0001, right? Right. Correct. That is your epsilon. You are disagreeing with me and you are saying that actually limit is not L, it is something different. The difference between L, which I was saying was 0, you are saying actually limit is this, right? Correct. Right. So what I have to show here is that there will be some m, कोई ऐसा m होगा such that after that, उसके बाद सारे terms will be such that fn minus L is less than epsilon. समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? मतलब एक कोई कट ऑफ पॉइंट है m का, आफ्टर विच ऑल माय टर्म्स आर क्लोजर टू L than your epsilon. समझ में आता है. मतलब पहले जो थे वो बेसिकली थोड़े दूर थे, पर जैसे जैसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जा रहे हैं तो वो डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है. और तुम शो कर सकते हो कि तुम कोई भी epsilon चूज कर लो, लेकिन बस अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 थी तब कट ऑफ पॉइंट यहीं पे कहीं पे आ जाएगा, राइट? बहुत छोटा एप्सिलॉन तुमने चूज किया तो कट ऑफ पॉइंट विल कम फर्दर अहेड. लेकिन
there will be a cutoff point beyond which all terms of the sequence will be such that difference between fn and the limit will be lesser than epsilon, right? So that you can easily calculate here. fn क्या है 1 by n minus l, right? l क्या था मेरा 1 by n minus 0 is less than epsilon था 0.0001, right? Correct. Correct. So 1 by n mod is less than 0.0001, and you can say that 1000 इसमें 1 by 0.0001 कर लो, तो 10,000, n is greater than 10,000, right? If you take, this is my m value, so जब m will be 10,000 or more, then I can guarantee you that the terms of the sequence will be closer to 0 rather than to 0.001, right? मतलब 10,000 के बाद तो terms are smaller than that, no? 0.0001, sir. Right? Are you understanding what is happening? So definition of convergence is what? If I say that limit n tends to infinity f of n is equal to L, what I mean to say is for each given epsilon, कोई भी ऐसा epsilon you can choose, no matter how small it is, there is an m such that mod of f of n minus L is less than epsilon for n greater than equal to m, right? Correct. This is clear, right? Yes. मतलब it basically कोई एक कट ऑफ पॉइंट m होगा after which your series will get closer to the limit value and closer than epsilon, no matter what epsilon you choose, right? So there are infinite terms. So before the m cutoff point से पहले तो there will be only finite terms, right? Suppose this is the cutoff point, right? So basically Cutoff point के बाद there will be infinite terms, right? सर अगर हम अलग-अलग एप्सिलॉन चुनेंगे मतलब अलग-अलग एप्सिलॉन चूज करेंगे तो उस हिसाब से कट ऑफ पॉइंट हमारा वो करेगा। हाँ, अलग-अलग चूज करोगे तो अलग होगा। जैसे मान लो if you say epsilon was 0.1, right? Then same series 1 by n, then you can say that n should be greater than 10. 10 के बाद you will be able to say the 11th term will be lesser than 0.1, right? Correct. Right. Because ये sequence में when you say epsilon is 0.1, what you are really saying is instead of the limit being 0, you are saying that the limit is actually 0.1, right? The difference between the limit that you thought is 0.1, so you will get closer to 0 if you get n greater than 10. In this case, if you choose a different epsilon, you will get a different cutoff point, right? So cutoff point से पहले there will be finite number of terms, and after that there will be infinite number of terms, right? So therefore we say that the function converges to the limiting value L because actually infinite number of terms are closer to L rather than anything else, right? So that is your basic definition. Then the next thing is if a sequence has no limit, if a sequence has no limit as n tends to infinity, it is possible that it does not converge to any particular limit, then it is called divergent. Then it is a divergent sequence. Okay. So we'll see examples of how it will become divergent. If a sequence Fn
converges to 0 if limit n tends to infinity f of n is equal to 0, then we say it is a null sequence. These are just terms, right? You just need to know what is the meaning of null sequence, converging sequence, diverging sequence, and so on. Okay. Then there are some theorems. हम लोग theorems का proof अभी नहीं करेंगे, but all of these theorems can be proved. We can show the proof, but I don't think we have time for that so much. So we'll just learn what the proofs are saying. First theorem says that each convergent sequence, the limit of a sequence is, if it exists, is unique. What is the meaning of this? If a sequence is converging to some limit, it can only have one value. It cannot have two different values, right? Right. So basically, because the terms will get close to something, right? It cannot get close to two separate things. Right. Okay, so that is the first theorem. There is a proof for it, but we will not do the proof right now. If you are curious about any proof, then we can do that proof later. But you can tell me, but right now we'll not do the proof. The second thing is every converging sequence is bounded. What do we mean by bounded? Bounded means there is an upper and a lower bound to the sequence. You know about upper and lower bounds of functions and all, right? It's like saying that function is less than equal to something and greater than equal to something, right? Matlab 1 by n, for example, 1 by n sequence that we saw was greater than 0 always, right? Correct. Right. And it was also always less than 1, right? Right. So that is your lower bound, that is your upper bound. So this sequence was converging to 0, and the theorem is saying that every converging sequence has to be bounded, right? But converse is not true. It is not necessary that sequence is bounded, then it has to converge to some limit. Okay? समझ में आ रहा है? Agar, if it is converging, we know it is bounded, but if it is bounded, we don't know for sure it will converge or not, right? Converging will be done only by checking if that limit is true, right? If that limit exists. एग्जांपल देखेंगे सीक्वेंस की क्या? मतलब एग्जांपल जैसे कि एक सीक्वेंस जो कि बाउंडेड हो बट कन्वर्ज ना करे. हाँ, there are many examples. So example is this fn minus 1 power n. So obviously you will see that the values of this are what? Minus 1, plus 1, minus 1, plus 1. It is clearly bounded. Function values has to be less than equal to 1, greater than equal to minus 1, right? Sequence has only these two values, right? So it is bounded, correct? But this does not converge to any limit. Does not converge to any limit. Why? Why does it not converge to any limit? Because the function keeps oscillating. Fluctuate कर रहा है ना सर लिमिट. So it keeps going up, down. So you cannot say for sure that for all n, you can't say that there for any epsilon, there is an m such that mod of f of x n minus L is less than epsilon for all n greater than equal to m, because one time it will be less, but the next time it will be more, right? You understand क्या हो रहा है ना? It might come close to 1 many times, but it is
the next term after that will go up, right? So it will not be epsilon will not, it will be a small quantity, so you'll not be able to prove this, right? So examples are like that. So converse of the theorem is not true. Then the next, और अगर हम इस डेफिनेशन के अलावा नॉर्मली भी देखें तो लिमिट, अगर हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इस केस में, तो वो तो मतलब ऐसे केसेस में जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन भी करते थे तो जब फ्लक्चुएट कर रहा था तो लिमिट से डज नॉट एग्जिस्ट. हाँ, so इसलिए it doesn't exist. This is also limit only. There is no difference between saying this and saying limit n tends to infinity of f of n. It's the same thing. So it's बस उसको ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि this is the way the definitions are written in higher maths. But fine, it is limit only still. So जैसे for example, let's look at this sequence. Sequence is 1 by 3 power n. Show that it converges to 0. Show that it converges to 0. Right? ये है, right? बेसिक लिमिट से तो हो जाएगा जीरो. लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/3 टू द पावर n. जो a टू द पावर x फंक्शन होता है, अगर वो इंफिनिटी को टेंड करे तो वो इंफिनिटी को टेंड करता है, तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ओवरऑल क्वांटिटी जीरो को टेंड करेगा. Correct. But the whole point here is that you have to prove that it tends to 0. वो तो अभी तुमने just बोल दिया ना कि it tends to 0, right? Using that definition that we have studied. But I don't think it is important right now, so we can skip that. But you know that it tends to 0, right? Right. Yes. But actually, if you have to do some maths in real analysis, you will have to show this using that definition, that you will have to show that let epsilon greater than 0 be given, right? And then you have to say that f of n 1 by 3 power n minus 0, which is your stated limit, is less than epsilon for all n greater than m, right? You have to find such m, right? It is not hard actually. You just say 1 by 3 power n is less than epsilon. So epsilon is greater than 1 by 3 power n. So fine. So you can say if I take log on both sides, log epsilon is greater than minus n log 3, right? So you will get log epsilon is less than n log 3, right? And you say n is greater than log epsilon by log 3, correct? Correct. So इसी से आ रहा है ना, इसी से आ रहा है n greater than इस values के लिए this will be true, right? This inequality will be true if n is greater than this, right? Correct. So that is your m value. M value is log 3 epsilon. Any value of n greater than this will make it. सर इसमें नेगेटिव नहीं आएगा? किसमें? No, 1 by 3 power n is always positive. नहीं सर, इसमें जो log एप्सिलॉन में आपने इनइक्वालिटी में दोनों तरफ नेगेटिव किया हमने, तो इनइक्वालिटी पलट गई. तो एलएचएस में नेगेटिव नहीं आना चाहिए. This was the thing. After that, I removed -1. It became like this, right? Greater से less than हो गया ना? Because of -1, minus there. सही तो है, क्या दिक्कत है? Right? तो n greater than this value के बाद you will be able to say that this inequality is always true. So that is the proof, but don't worry about it so much as long as you can see that the limit is tending to 0, right? For example, find the basically show that this sequence
show that sequence f of n defined by f of n is equal to root over n plus 1 minus root of n. सर मतलब एक बार प्रीवियस स्लाइड क्या हो उसमें? तो उसी चीज में सर वो होगा नेगेटिव आएगा सर. इट्स फाइन, तुम चेक कर लो जो भी आएगा, लेकिन एक वैल्यू आ जाएगा ना इनका. हाँ सर वो वैल्यू का सही है. चलो फाइनली वैल्यू लाना है इनका, ओके सर कोई नहीं राइट? अगर नेगेटिव मैंने गलत किया होगा to some careless mistake, you can correct it. ओके. Do this, show that this is convergent. So basically you have to find limit, right? n tending to infinity. So we do this for using rationalization. Do this, find the limit. सर जीरो ही है. क्या आ रहा है? सर जीरो आ रहा है. So this limit comes out to be 0, so it is convergent, and you will say that the limit n tends to infinity, f of n is 0, so sequence converges to 0, right? Right. एक्चुअल प्रूफ्स ये जो अभी तुम कर रहे हो ना, जो लिमिट निकाल के कर रहे हो, दैट इज 12th स्टैंडर्ड लेवल स्टफ, राइट? Yes, sir. एक्चुअल प्रूफ में तुमको वो डेफिनेशन से करना पड़ेगा, Basic definition जो आपने बताई. बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट आई थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में तो कैसे भी करो आंसर लाना है. स्पेशली ऑब्जेक्टिव सर. हाँ, तो इसलिए अभी हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन है, देखो. ठीक है सर, मैं घर पे उस वाले मेथड से भी ट्राई करूंगा एक बार. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n पावर 1 by n, इसका पता करना है. व्हाट इज द लिमिट? Basically the sequence is n power 1 by n. Now you have to find out what is it converging to. Yes sir, समझ में आ गया. Let's say it is converging to this limit is equal to L. You should take log on both sides. Tending to infinity to the power tending to 0. ये आ रहा है, limit n tends to infinity, right? Correct. Yes. So इस चीज का लिमिट अगर निकाल सकते हो तो you will get the answer. हाँ सर, एक सेकंड. सर इसका वो आना चाहिए does not exist. क्यों does not exist क्यों आएगा? सर इसको It is in what form? tending to infinity upon tending to infinity. Infinity on infinity form जो होता है तो क्या कर सकते हैं? सर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं. So it will be what? 1 by n by 1, right? अच्छा हाँ सॉरी सर, वो मैंने वो मैंने 1/n² गलती से लिख दिया तो वो चला था. हाँ ठीक है, फिर 0 आ जाएगा. So it is tending to 0 here. So this L will be 1, right? Log L is 0. हाँ सर समझ में आ गया, वो L1 So log to any case is 0. so this
this sequence will converge to 1. One. Which is obvious if you see some terms here. First term is 1, second term is √2, third term is 3 power 1 by 3, right? This is 1.414. Cube root of 3 will be quite small, and then after that it becomes smaller and smaller powers, right? वो 1 की तरफ ही जा, यही कहना Is decreasing only, right? Okay, then next one is this one. Find limit n tends to infinity 1 by root of n factorial. तो 0 ही होगा. It will be 0 again. A proper proof of it can be given. ठीक है, वो e epsilon और m method से. ठीक है, but right now we'll save time. It is obvious it should be 0, right? फैक्टोरियल बहुत तेजी से जाता है. क्या क्या? फैक्टोरियल बहुत तेजी से जाता है इन्फिनिटी की तरफ. Yeah. Okay. Then some more theory. So suppose we have two sequences, fn and phi n. So the property is this: if limit of fn is equal to k and limit of phi n is equal to L. When I say limit, I mean n tends to infinity in both cases. Then we can say that limit of fn plus phi n, and actually plus minus, will be equal to k plus minus L. Okay. This is like the way we handle limits. If you have two different sequences both converging to some limits, then sum or difference of those sequences will converge to the sum and difference of the limits, right? Then similarly, limit of n tends to infinity, fn multiplied by phi n will also tend to k into L. And limit of n tends to infinity, fn by phi n will tend to k by L as long as L is not 0. Is not equal to 0. Right? Right. So these are basic things that help you to manipulate different sequences. So now you can add, subtract, multiply, divide sequences and get a new sequence. And you can still find the limit of the new sequence, right? Correct. Correct. Well, next thing is you can even multiply with a constant c. So if limit fn is k and c is any fixed real number, you can say that limit of n tends to infinity c f of n will be equal to ck. Correct? Okay. अब divergence का definition क्या है? What is the proper definition of divergent sequences? So we will say that तो पहले तो हमने ये कहा था कि कन्वर्ज नहीं करेगा तो डाइवर्ज. so now so that is a negative definition, no? मतलब that is like converge नहीं हो रहा है तो diverge. So direct definition क्या होगा? Right? आई थिंक सो उसमें जैसे ग्रेटर देन हो जाएगा rather than लेस देन होता है. नहीं, a sequence fn is अगर diverge to infinity है, a sequence fn is said to be divergent to infinity if for any given positive number delta, let's say, there is same type of definition, there is an integer m such that fn is greater than delta
for all n greater than equal to m. समझ में आ रहा है? सिंपल सा डेफिनेशन है. Function, a sequence is said to be divergent to infinity if no matter तुम कौन सा भी डेल्टा चूज कर लो, there is an integer m, उसके बाद सारे terms will be greater than delta, right? M is the cutoff point again. No matter what delta you pick, I can find an M such that after that every term is greater than delta, right? समझ नहीं आ रहा है तुमको? हाँ सर, मतलब फिर जब वो डेल्टा से फिर बढ़ता ही जा रहा है. उसके बाद सारे terms are bigger than delta, so obviously your delta is wrong, right? You said that function had a sequence, function had a limit delta, but I have proved by this that there are so many integers after m, there is an m such that function or sequence is always greater than delta, right? After that. So then you can pick a higher delta, right? And still I will be able to find a higher cutoff point. And this process can go on forever. Therefore, the function is diverging to infinity, right? Are you understanding what I'm saying? Yes, sir. Suppose function was, the sequence was fn was n square, right? I am saying it tends to infinity. You are saying it tends to 10,000, right? Then I can easily say that no, it doesn't tend to 10,000 because beyond n greater than 100, all the terms are greater than 10,000, right? Right. Then you said, okay, 10,000 maybe was wrong. Maybe the limit is 100,000, but I can find n greater than something, right? Beyond which it is bigger than 100,000. Right. That is this definition, correct? Correct. Similarly, divergence to minus infinity, you will say that divergence to minus infinity means that for any positive, for any given positive delta, there exists m such that fn, one second, fn is less than minus delta for all n greater than equal to m, right? One second, just hold on, I have to take a call. Okay, so this is your definition of convergence or divergence. One more thing that you need to know is what do you mean by having infinite oscillation? The type of oscillation that we saw when we saw the sequence minus 1 power n, right? Okay, so a function is said to have infinite oscillation if it is divergent. If it is divergent neither to infinity nor to minus infinity. So the function is divergent, but not towards infinity or minus infinity. That means it must be somewhere in between and oscillating. Values के बीच में. हाँ, कुछ values के बीच में it is oscillating. Anyway, a couple of things that you need to know about divergent sequences. The reason we are discussing this is because sometimes questions can be asked on these, where you say sequence fn and sequence phi n
both diverge to infinity, then Fn plus phi n and Fn phi n, ये जो sequences हैं, they also diverge to infinity, both diverge to infinity. Okay, so right now when I say infinity, we mean plus infinity here, right? And similarly, if Fn diverges to infinity and phi n is bounded, bounded means it has upper bound and lower bound, right? Then Fn plus phi n diverges to infinity. ये समझ में आ रहा है? One of the sequences Fn is diverging to infinity, but phi n is a bounded sequence, right? But still the sum then will diverge to infinity. Correct? But notice that we did not write product here. Product nahi likhe. Fn into phi n is not necessary because phi n could be a null sequence, right? You understand? Right. ऐसा हो सकता है कि phi n is a null sequence because it was a converge bounded sequence and this is diverging, but product is such that product does not diverge, right? Correct. Correct. So therefore we are only saying this for sum. So it is important to know these rules. There are 2-3 more rules because multiple choice questions can be framed on this. Okay, one sequence is converging, one sequence is diverging. What will happen to this, right? So know these things. Then the third thing is, suppose Fn diverges to infinity and phi n converges, maybe to some limit. Then we can say Fn plus phi n will diverge. Because if it converges, it will converge to some finite L, right? So the sum will still diverge. Correct? Makes sense, no? Yes, sir. Then another theorem, it says if phi n diverges to infinity and Fn is a sequence such that terms of Fn are greater than equal to phi n for all n belongs to natural number, then obviously Fn also diverges. अरे travel. समझ में आ रहा है क्यों? Because terms of Fn are bigger than phi n. Phi n is only diverging. Huh? You have to say whether you understand or not. Silent रहो तो मुझे पता नहीं चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको कुछ. सोच लिया सर, जैसे u to the power x हो सकता है और u to the power x plus 5. हाँ मतलब you can say this is phi n is x and Fn is e power x or something, right? This itself diverges, so this will definitely diverge because it's greater than, right? Then इसी का opposite, if phi n diverges to minus infinity and Fn is less than phi n, then Fn also diverges to minus infinity, right? This is the same thing. Then if Fn diverges to infinity
and C is a non-zero constant. Non-zero constant. Then C of Fn diverges to infinity if C is positive, and obviously diverges to minus infinity if C is negative, right? And convergent if C is 0. It will converge if C is 0. Makes sense? Yes, sir. Now, there are some examples here that we need to see because they are a little tricky. So, for example, let Fn and Gn be two sequences such that Fn plus Gn and Fn Gn converge, right? Right. Show that it is possible that Fn and Gn may diverge. Matlab, it is possible for two non-converging sequences or divergent sequences to combine and become converging, Yes, sir. right? Yes, sir. So example इसका सोचना है. सर अगर जैसे मतलब एक को इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो फिर जो उनका एडिशन होगा वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस टेंडिंग टू इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा. तो वो अब चाहे तो इन्फिनिटी को भी कन्वर्ट कर सकता है और चाहे तो एक फिक्स वैल्यू की तरफ आ सकता है. जैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो फिक्स वैल्यू की तरफ आते हैं. That is one possibility. So you should construct an example here. So best example or simplest example would be this. Suppose this is minus 1 power n, right? Clearly diverging because it is oscillating, right? And Gn is what? Minus 1 power n plus 1. This is also diverging, right? Correct. Right. But if you combine them, what will happen to Fn plus Gn? All the terms are 0, right? Correct. Right. So this is a converging sequence, and Fn multiplied by Gn क्या होगा सारे terms? All the terms are minus 1. Yes, sir. माइनस वन ऑड हो जाएगा. माइनस वन टू द पावर 2 प्लस वन तो ऑड होगा. तो माइनस. So therefore, both of the product and the sum are converging while individual sequences are diverging. So this is a possibility, right? Makes sense, right? Right. Okay. Then find the limit of the sequence f of n is equal to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 square plus till 1 by 3 power n minus 1. This is first one, and second one is f of n, or find the limit n tends to infinity of sine of n pi by n. Yes, sir. तो निकाल लेंगे. ये सर फर्स्ट वाले में लास्ट टर्म क्या है? 1/3 टू द पावर n minus 1.
फर्स्ट वन हो रहा है? हाँ सर, एक सेकंड में हो रहा है बस कैलकुलेशन में। 3/2 होगा। सही है सर। 3/2 सर, सेकंड ट्राई। सेकंड वाला 0 सही है। हाँ, okay. Next thing is, in some theorems, if limit of f of n is equal to L, it implies limit of mod of f of n will be equal to mod of L. But the converse is not true. So what we have done is we have taken mod on both sides. So if the sequence is converging, then the mod of the terms with of new sequence with terms which are mod of the old sequence will converge to mod L, right? But this is not necessarily going to imply that this sequence is converging, Okay sir. right? Right. क्यों? क्योंकि you can take fn to be -1 power n. So obviously we know that this is diverging, right? But mod of fn would be what? Mod of fn is just simply 1, right? That is converging, correct? Are you understanding that this example proves that opposite is not true? Sir, can we like pause for a minute? Yes sir. You have understood this one? Yes sir. Actually there was some disturbance, so एक मिनट में देखता हूँ। ठीक है सर, समझ में। The opposite is not true. This side is true. If this is converging to L, then mod will also converge to mod L, right? Right. Second one is the squeeze theorem, which you have probably seen in limits also. So Yes. it says, Squeeze place theorem, sandwich theorem is also.
if there are three sequences like this, and such that Fn, terms of Fn is less than Gn is less than Hn, right? And limit of Fn is equal to limit of Hn is equal to L, then implies that limit of Gn is also L, right? Correct, no? So this can help us find some limits. Like we'll see later applications of this. So for example, limits like f of n is equal to cos n pi by n. Find the limit of this sequence. Hmm? It will be 0. It is 0 because we can say that if Fn and Gn are two sequences such that mod of Fn is less than mod of Gn, right? And limit of Gn is tending to 0, then that implies limit of Fn also tends to 0. So here we can say mod of Fn is what? Mod of cos n pi by n, which is less than equal to 1 by n, right? Because cos will be less than 1, correct? Yes, sir. And the इसको gn, if we call this as gn, we know gn tends to 0. So we have two sequences Fn and Gn where Fn terms are always less than Gn terms, mod, and limit of Gn is tending to 0, right? Right. So limit of Fn will also tend to 0. Okay. So basically इसमें जो Fn और Gn है वो हमने mod Fn और mod Gn लिया है. नहीं, Fn और Gn normal sequence है, but this is also a corollary कि the sequences are such that mod of each term of Fn is less than mod of each term of Gn. Okay. Okay, then फिर लिमिट जो होगी Gn की 0 है तो Fn की भी 0 होगी. हाँ, लिमिट Gn की अगर 0 है, which is the greater terms just वाला सीरीज, वो अगर टेंडिंग टू 0 हो रहा है तो लोअर टर्म्स वाला सीरीज भी टेंड टू 0 होगा. ठीक है. Okay. Then there is Cauchy's first theorem. Cauchy's first theorem, which says if limit of n tends to infinity f of n is equal to L, then limit of n tends to infinity f1 plus f2 plus fn by n will be equal to 1. इसका मतलब सोचो, इसका मतलब क्या है? Is equal to L, right? By mistake, this is L. Like first you have to understand what is the intuitive meaning of the theorem. After that we'll see example where this can be used. So this is a convergent sequence, right? It is converging to L. 1 मिनट और सोचो सर.
इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? It is limit of average value, right? Average of n terms, right? Right, sir. Average of. So this is like average of first n terms. Yes, So sir. as n tends to infinity, that average value also becomes L. Yes. That is the theorem. Proof we are not seeing right now. We will see applications. Okay. So what is the theorem saying? If it is a converging sequence and limit is L, then the average term also tends to L, Okay, sir. right? Average of n terms, Okay. right? So example, ये है limit. Let's try to find out limit n tends to infinity 1 by n, 1 plus 2 power 1 by 2 plus 3 power 1 by 3, so on, n power 1 by n. क्या होगा? And then 0 होगी सर. नहीं, Last term n to the power 1 upon n का निकालें. you have to try and use Cauchy's first theorem. Try to use that. So Cauchy's first theorem, first you need an fn sequence, right? Previously we have seen this example, no? Limit n tends to infinity n power 1 by n. सर यही किया, इसी की लिमिट निकाल रहा हूँ. So that was a converging sequence with 1, no? सर एक सेकंड एक और बारी कैलकुलेट करता हूँ. 1 ये पहले कर लिया है हमने. हाँ सर, वो एक्चुअली log l की वैल्यू आएगी 0, तो l होगा 1. गलती से मैंने वो कर दिया. log l की वैल्यू आएगी 0, तो l होगा 1. हाँ, वो गलती से हो गया. So fn is converging to 1, right? Right. Yes, sir. This is what? This is average of terms f1 plus f2 till. हाँ, वो जो ऊपर वाली स्टेटमेंट यूज करके जो लास्ट टर्म है fn उसका This निकाल. will also converge to L, which is 1, right? Right. Another example, limit n tends to infinity 1 by root over n square plus 1 plus 1 by root over n square plus 2, so on till 1 by root over n square plus n. सर इसमें एवरेज वाला जो टर्म नहीं है. You can make it, बना सकते हो ऐसा. ओके ओके सर. Put a 1 by n outside. वही सर n स्क्वायर.
1 आ जाएगा। So sequence was this, right? Sequence fn was n by root over n square plus n. Yes sir. This sequence का limit, n tend into infinity. so you can divide by n. So 1 by root over 1 plus 1 by n, which tends to 1. 1 आ रहा है। So average will also tend to 1, right? Or anyway, you could have done like here, यहाँ पे n square you can take out, right? Right. It would have been 1 plus 1 by n plus 1 by 1. यही किया सर, सेम ही आ जाएगा, यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये n स्क्वायर ऊपर चले जाएगा ना, अंडर रूट n ऊपर चले जाएगा, तो सेम हो जाएगा, सेम आएगा, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट। So it is average of this sequence, right? So that sequence tends to 1. So the answer is also 1. Correct? ये 1 upon n square ही होगा सर। You will get answer as 1 finally, right? And then there is Cauchy's second theorem, which says if limit n tends to infinity f of n equal to L, where all the fn's are positive for all natural numbers, then limit n tends to infinity f1, f2, f3, fn product whole raised to power 1 by n is also L. So इसका क्या मतलब है? जो product to the power 1 upon n, that will be equal to the. This is like the geometric mean of n things, right? Right. पिछले वाला तो क्या था? am of n terms. Yes, arithmetic mean. पिछला वाला था if it is a converging sequence, am of the n terms is also tending to L. And ये है gm of n terms is also tending to L. Yes. As long as your terms are positive and the sequence is converging. Yes. Right? There is another corollary to this which comes from here only, which says if f of n is a sequence such that f of n is greater than 0 for all n belongs to n, and limit of n tends to infinity f of n plus 1 by f of n is equal to L, then limit of n tends to infinity f of n power 1 by n is also equal to L. Okay. So remember these two things you should know, this one and this one. What is this saying? Again, फिर से it's a sequence such that you have positive terms in that sequence, right? And this is like, later we'll see that this is like the ratio test. So you are saying ratio of n plus 1 and fn, n plus 1th term and nth term is tending to L, right? Right. Then nth term power 1 by n, that limit will also tend to L. So both these things try to make a note of and try to remember, because very useful these will be in calculating limits. So पिछला वाला Cauchy's first theorem, Cauchy's second theorem, and this corollary. These are very important. We'll see now some examples where we'll use this. Okay, so write them down.
will be useful for you. ओके सर, एक सर लिख लिया। Then example is if limit n tends to infinity, 1 plus 1 by n power n is equal to e, show that limit n tends to infinity, 2 by 1 multiplied by 3 by 2 whole square multiplied by 4 by 3 whole cube n plus 1 by n power n whole power 1 by n is equal to e. This is direct application of Cauchy's second theorem. एक सेकंड। ठीक है सर, सही है। हो रहा है? हाँ सर, पूरा एग्जैक्ट सेम है ना। fn अगर हम देखें तो वही है जो सेम है बिल्कुल। ये जो इसमें लिखा है ना एंड लास्ट टर्म fn, और ये सेम। So if you put f1 f2 it is gm of n terms, right? Right. It is f1 f2 till fn power 1 by n. Right, sir. That is your Cauchy's second theorem only. Yeah, right, sir. Okay, and this limit you have seen in lower classes also, like this limit you know how to prove, right? Right, sir, वो e की पावर में चले जाता है, जो LHS है उसको e की पावर में लिख लेते हैं। कैसे होगा ये प्रूफ? सर एक सेकंड, जैसे कि ये हाँ, ये टेंडिंग टू 1 टू द पावर टेंडिंग टू इंफिनिटी का फॉर्म है। तो इसे हम e की पावर में लिख लेते हैं सीधा। नहीं तो क्या करते हैं वो तो पता है, बट कैसे प्रूफ होता है इसका? यू नो क्यों ऐसे लिखते हैं? लॉग से लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए e पावर x का क्या एक्सपेंशन है? 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, सो ऑन एंड ऑन। हाँ, तो यहाँ पे this part you can say 1 plus 1 by n power n. How will you expand it using binomial theorem? You will say 1 plus n into 1 by n plus n into n minus 1 by 2 into 1 by n whole square, right? Right.
n into n minus 1, n minus 2 by 1, 2, 3. This is nc3 into 1 by n whole cube, right? Correct. Correct. So now it is 1 plus 1 plus 1 by n square. So n will cancel and n will cancel. It will be 1 into 1 minus 1 by n by 2 plus this will be 1 into 1 minus 1 by n, 1 minus 2 by n by 3 factorial, right? राइट। तो ऐसे आ सर रहा है। एन इन्फिनिटी जाएगा तो वो बिल्कुल ई टू दी पावर एक्स की तरह हो जाएगा, जब उसमें मतलब 1 डालेंगे ई टू दी पावर एक्स वैसा ही हो जाएगा। So e power 1 is the same, and यहाँ पे n tends to infinity, this also is the same. तो प्रूफ करा था, बट ये वाला प्रूफ नहीं करा था, ऐसे नहीं करा, नॉर्मल लॉग वाला प्रूफ करा था। अल्टीमेटली तो वो बायनोमियल एक्सपेंशन लॉग का सीरीज फिर लिखना पड़ेगा। How will you do log? You do n log 1 plus 1 by n, right? तो फिर फाइनली log 1 plus x का सीरीज लिखना पड़ेगा ना। मेरे ख्याल से जब हमने नॉर्मल में करा था 11-12 में, तो ये बिना उसके सीरीज के बिना किया था शायद। कोई सीरीज के बिना कोई प्रूफ नहीं है। नहीं है, बिना नॉर्मल लॉग के, जैसे कि पहला वाला किया था एल लेके। नहीं, कैसे करोगे? n log 1 plus 1 by n is equal to log e, right? फिर अब तो क्या करोगे फिर? नहीं हो पाया। नहीं हो सकता है, रुको, ऐसे कर सकते हो, इसको बाई 1 by n लिख सकते हैं। हाँ सर, यही किया था। अब एन इन्फिनिटी ये नॉर्मल वो हो गया, नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बन 0 by 0, हाँ। then you can differentiate it। नहीं, हाँ, डिफरेंशिएट ही करना है, और क्या करोगे? एक मिनट सर, एक मिनट। इट इज 0 by 0 फॉर्म राइट नाउ। यस इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सर, ये स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, जहाँ पर एक्स 0 जा रहा है। तो स्टैंडर्ड लिमिट कैसे आता है, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे हो? हाँ, वो तो फॉर्म उसी से आता है, सही कह रहे हैं, सीरीज से ही आता है, log 1 प्लस एक्स को एक्सपैंड करके। हाँ, तो फाइनली सीरीज से ही आएगा या फिर तुम एल हॉपिटल्स रूल लगाओगे? यस सर। ठीक है, एनीवे दिस इज डन। हाँ सर, ये थोड़ा आउट ऑफ टच था ना, अभी तो वो याद नहीं आ आईआईटी जेई वाला कैलकुलस तुमको रिवाइज करना पड़ेगा फुली। रहा। हाँ सर, वो एक्चुअली अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा था मैं आजकल। जेई कैलकुलस का बहुत सारा क्वेश्चंस तो जेई कैलकुलस से हो जाएगा। ये सर पढ़ा था मैंने लास्ट टाइम जब मैंने प्रिपेयर किया था, तब पढ़ा था, पर अभी थोड़ा सा आउट ऑफ टच चल रहा है। कहाँ से पढ़ रहे हो? सर नॉर्मल मतलब खुद ही से पढ़ा था सर। कौन सा बुक्स? बुक्स का मतलब जेई वाला कैलकुलस किस जगह से पढ़ रहे हो? सर वो कोचिंग के मटेरियल उन्हीं से क्वेश्चंस कर लेता था, क्वेश्चन भी था मेन तो। कौन सा कोचिंग मटेरियल है तुम्हारे पास? सर विद्या मंदिर क्लासेस का था मेरे को, दिल्ली में है वो स्पेसिफिकली। कोई बुक है तुम्हारे पास घर पे? अमित अग्रवाल है। रमेश अग्रवाल वाला कैलकुलस के बुक का तुमको थोड़ा करना पड़ेगा वो। सर उसमें क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही है, तो टाइम लगता है उसमें, ये बात है। तब करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर सारे चैप्टर्स के आते हैं तुमको क्वेश्चन के। जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल्स ना, एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, सारे एग्जांपल्स कर लो। सर मतलब एक बार करूंगा तो रिकॉल हो जाएगा, कोई भी मटेरियल से करूँ रिकॉल हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। नहीं हो जाएगा, नहीं एकदम जरूरी है कि हो जाए तुरंत। हाँ सर, वो करूंगा सर, पक्का करूंगा। ये नहीं कि छोड़ के रखना बाद के लिए, वो करना नहीं पड़ेगा। हाँ सर, वो सही कह रहे हैं सर। हाँ, फाइंड द लिमिट n tends to infinity n power n by n factorial power 1 by n। सर अभी तो सिर्फ यही करूँ ना लिमिट। हाँ, सर अभी तो लिमिट्स ही करूँ ना सिर्फ। नहीं वो फुल कैलकुलस करो ना, क्योंकि हम लोग को कितना टाइम मिलेगा, हम लोग हायर लेवल स्टफ में टाइम लगाएंगे ना, इसमें थोड़े अब करेंगे। नहीं सर, मतलब अभी करंटली ये रियल एनालिसिस के लिए तो लिमिट्स ही करूँ या फिर अभी पूरा कर लूँ? इतना टाइम नहीं है कि तुम किसी के लिए वेट कर रहे हो।
नहीं सर, मैं क्या अभी कुछ और टॉपिक कर रहा हूँ ना, तो वो इस हिसाब से बोल रहा था। और पूरा कैलकुलस करना है जल्दी से जल्दी, सो लिमिट्स के लिए वेट मत करो, और भी काम होगा. This is stuff that you have to do. I will not be doing this, so you should be doing it as much as possible. I will tell you other books that you have to read for what we are doing. ओके सर। लेकिन ये तो तुमको साइड में करना होगा ना, उसके लिए ये मत करो कि वहां पे लिमिट्स ही कर रहा हूँ बस. अभी फुल कैलकुलस करना है ना वो तो. ओके सर। पूरा कैलकुलस सिलेबस में है, सब चीज क्वेश्चन सारे चैप्टर से आ रहे हैं, राइट. नहीं सर, वो आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री कर रहा था तो ये सब था बस, और कुछ नहीं। नहीं, ये वाला ट्राई करो. इसमें एक सीक्वेंस देखो, एफ एन इज एन पावर एन बाय एन फैक्टोरियल. सपोज दिस इज योर सीक्वेंस, राइट. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एन पावर वन बाय एन, राइट. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हेलो. सॉरी, वो म्यूट पे था, म्यूट पे था। एफ ऑफ एन प्लस वन अपॉन एफ ऑफ एन वाले से करने की सोच सकते हैं सर इसे, हाँ, क्योंकि एन टू दी पावर वो कट जाएगा वो सर। कोरोलरी टू सेकंड थ्योरम, उसी से करना है, क्योंकि उसमें भी तुमको फाइनली इट टेल्स यू एफ ऑफ एन पावर वन बाय एन वैल्यू, राइट. तो तुमको एफ ऑफ एन प्लस वन बाय एफ ऑफ एन निकालो, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी. That will be n plus 1 power n plus 1 by n plus 1 factorial divided by n power n by n factorial. So this will be n plus 1 power n plus 1 by n power n, and नीचे में एक n plus 1, right? So this becomes n plus 1 power n by n power n, right? ये आ रहा है. तो फिर इसको कम वो कर देंगे, एन प्लस वन अपॉन एन टू होल टू दी पावर एन, तो This वन becomes प्लस वन अपॉन एन टू दी पावर एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, e. वन टू दी पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाएगा। No, this is अभी तो किया है वन, ये तो e. हाँ सर, वो मैं अपना अलग से कर रहा था तो अच्छा हाँ आ गया, ई समझ में आ गया सर। तो ये e अगर आ गया तो ये भी e होगा, हाँ सर, बाय वो द कोरोलरी. हाँ सेकंड थ्योरम से, हाँ, ठीक है इसका सर। आंसर e आएगा. अगर नॉर्मल तरीके से बिना ये सब थ्योरम्स के करने चाहोगे तो थोड़ा इट विल बी डिफिकल्ट, राइट. राइट सर। You need this knowledge so that you can attempt these questions in a faster way. यस सर, ऑब्वियसली। So make sure जो आज अभी अभी तक जो किया है सो रिवाइज कर लेना. और I will tell you like where to read it from. ये थॉमस एंड फिनी बुक का नाम सुना है कभी? नहीं सर, वो मैं पूछने ही वाला था कि कहाँ से ये थ्योरी पढ़ो। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री एक बुक है इसका. It will be available online. You can find it on gen.lib.rust.ec. अमेज़न पे नहीं होगी सर?
बुक खरीदने का टाइम नहीं है, उतना नहीं है टाइम. जस्ट गेट इट, डाउनलोड इट ऑन दिस वेबसाइट, library genesis, or I will send it to you, and you have to read the infinite series chapter. उसमें there are 14-15 chapters in the book. Don't have to read everything. Selected chapters पढ़ना है, ठीक है? तो infinite series वाला chapter पढ़ सकते हो अभी. For समझ next में आ रहा class. है? For next class. और next class नहीं, I'm just saying next class में I will be doing the theory, but this is something that you have to read. जब तुमको टाइम मिले तो तुम ये पढ़ना है तुमको. मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले ही ना सर? नेक्स्ट क्लास कब होगा उसका डिसाइड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपना पढ़ लेना. मैं बस बोल रहा हूँ तुमको पढ़ना है. ठीक है सर. नेक्स्ट क्लास के लिए जरूरी नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आई विल बी डूइंग अदर स्टफ, बट ये पूरा थियरी विल कम इन थोड़ी देर बाद. लाइक इट इज थर्ड और फोर्थ नंबर टॉपिक फॉर अस, बट दिस इज इम्पोर्टेंट दैट यू रीड इट फ्रॉम द बुक, Okay. and there will be one or two more chapters from the book that might be useful, so we'll do that later. Next class we'll continue with this. We are almost towards the end of the sequence basics part, then we'll go to infinite series and all. ये मोनोटोन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तो कहीं लिखा नहीं है ना सिलेबस में? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहीं देखा है तुमने सिलेबस में? नहीं, बट वो ऐसे पूछता है मोनोटोनिक और मोनोटोनिसिटी भी पूछता है वैसे. मोनोटोनिसिटी इज फाइन, बट have they, तुम देख लेना कहीं पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पूछा है, ओके सर, आई विल चेक. because that is a topic that is slightly difficult. तो वो देखना होगा कि कॉशी सीक्वेंस कहीं पे पूछते हैं, कॉशी सीक्वेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये अगर पूछते होंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये दो टर्म्स अगर पूछते हैं तो फिर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर यू कैन स्किप दैट. सर ये पता कैसे चलेगा कि पूछते हैं सर? चेक द सिलेबस, चेक द लास्ट 2-3 years पेपर्स. सर सिलेबस से नहीं पता चलेगा, सिलेबस में वो मेंशन नहीं करते इतना. वी विल हैव टू चेक क्वेश्चन. हाँ तो चेक द क्वेश्चन, इफ दीज टर्म्स आर देयर कंट्रोल एफ करके देखोगे कॉशी सीक्वेंस है क्या, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है कि नहीं. ओके सर. ओके, वील कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास का टाइम मैं तुमको बता दूंगा कल तक. If you want, we can do it on Monday or something, or earlier than next week. Okay, Monday would be great, sir. ठीक है, मैं तुमको बता दूंगा. Yes. Okay. Okay. See you. Bye. Right, sir, like how can I access this recording? I will send the recording.